all STDs invariably come with rashes. So that's why हम लोग ही देखते हैं. But अभी ऐसा स्किन पूरा बॉडी में है, कहीं पे भी होगा उधर का तो मैं देखूंगा. Exactly. Men can also take the cervical cancer vaccine because वो vaccine is against a virus, HPV virus, human papilloma virus, right? Same virus causes penile cancer, anal cancer, squamous cell carcinoma of the oral cavity, pharyngeal cancer. तो जब both men women में cancer same virus cause कर रहा है, why should only women take it? So sunscreen use is one of the best anti-aging measures that you can take. Okay, because आपका skin aging को थोड़ा slow करता है. I've identified कि this person has genital warts. मुझे दिख रहा है, molluscum है, दिख रहा है कि मुझे मालूम भी है कैसे हुआ है, right? They will always be in denial कि पता नहीं इसको कैसे हो गया. We don't know. It's been there since forever. The genital skin will anyways be darker than the rest of the body. That is how nature is. लोगों को लगता है कि देखो मैंने जिंदगी भर मैं धूप में जाऊंगा तो डार्क हो जाऊंगा, बट उसको तो लाइफ लॉन्ग छुपा के रखा, बट फिर भी डार्क कैसे? Shaving does not increase the rate of hair growth. Shaving does not increase the density of hair. Shaving does not make hair grow faster. ऐसा कुछ नहीं है. Foreign substance आपके बॉडी में डाल रहा हूँ. That is literally what a tattoo is. Okay. Whenever an outsider comes inside my body, my immune system is going to react to it. Hi Agni, welcome to Level Up with Aruna. Hello, thank you so much for having me. Super excited to host you. I mean, lot of good conversation is awaiting, and आपका जो segment है, different things that you're doing. I mean, that's one of the most important thing that needs to be out there. Okay. तो हम उसमें details में जाएंगे. But first of all, मेरे को आपसे एक बहुत basic चीज पूछनी है आपके बारे में. So आप you're in dermatology, you're a dermatosurgeon, and you're a venerologist, right? Yes. I pronounced it right. Yes, venerologist. Yeah. So first of all, tell me the difference and how you're handling three things at a time. It's not just me, okay? So every dermatologist who is trained in India is also a venereologist. Okay. Acha, okay. Okay, our degree is literally DVL, dermatology, venereology, leprology. Okay. So dermatology is study of skin diseases, venereology is study of sexually transmitted diseases, and leprology is study of leprosy. Okay. So every dermatologist who graduates in India has these three specializations. It's just that most of us don't end up practicing venereology and leprology in practice. Why is it so? It's not very socially acceptable because people oftentimes STDs, sexually transmitted diseases, are regarded with a lot of stigma, right? In your clinic, when I want to see dermatology cases, ऐसा लोग सोचते हैं, आई डोंट नो, ऐसा मुझे लगता है लोग सोचते हैं कि जहाँ पे हम नॉर्मल किसी का पिंपल देख रहे हैं, किसी का एक्जिमा देख रहे हैं, उसी के साथ किसी का बहुत STD देखेंगे, सेम टेबल पे बैठे, लाइक ऐसे लोग सोचते हैं, दैट्स व्हाई इन हिंदी STDs आर कॉल्ड गुप्त रोग. They're literally called गुप्त रोग. Makes sense, yeah. So that's why a lot of people don't want to claim that they are venereologists, even though सब उतने trained हैं जितने हम हैं. So I guess this is the reason. Like, this is new for me also. I mean, what you said, every dermat has this degree. I didn't know that. All everybody who's a dermatologist, जिसने इंडिया से अपना MD किया है, they are all dermatologists, venereologists, leprologists. हमारा 3 subjects होता है. So all of us are that. Because as far as I understand, whenever there's a problem related to some STI or anything of that sort, people don't know. Skin पे दिखेगा ना, कहाँ दिखेगा? और कहाँ दिखेगा? Because all STDs invariably come with rashes. So that's why हम लोग ही देखते हैं. But अभी ऐसा स्किन पूरा बॉडी में है, कहीं पे भी होगा उधर का तो मैं देखूंगा. Exactly. So it's just that a lot of women, if they get an STD, they end up going to their gynecologist because women feel कि gynac के पास है तो ठीक है. So that way I end up seeing a lot of male STDs because वो बेचारे कहाँ जाएंगे? They don't know who to go to. But awareness है इस चीज की, honestly, because I feel like you mentioned ना कि people, for women, they generally go to a gynac. Yeah, बराबर. Women का कुछ भी होगा, they go to gynac, right? They go to a gynac, but actually men don't know कि किसके पास जाना है. Men don't know, exactly. Men don't know. Yeah, true.
And how about, because you are creating a lot of good content about it on your social media also. So how is it, first of all, content creation journey is working along with the profession that you're doing? I'm a part-time content creator, accidental content creator. Accidental, is it? Accidental. So it just started in I think second wave के time. हाँ. उस टाइम हमने वैसे ही just randomly start किया था. That time I was working in the government sector that time, and when I would be reading my literature, my books, so then पढ़ते पढ़ते लगा था कि जो बहुत मुझे obvious चीज़ें लगती थी, I felt कि ये शायद normal public को नहीं पता होगी. I still remember I got this realization when I was studying diet and dermatology. Okay. So I was studying about the importance of diet and उसका acne से क्या relation है, pimples के साथ क्या relation है, कि अगर ज़्यादा शुगर खाओगे, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाओगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये सब खाने से योर पिंपल्स का चांस बढ़ जाता है, राइट? ये पता था, बट हम लाइक यार ये तो लोगों को शायद नहीं पता होगा. आई स्टिल रिमेंबर वो चैप्टर पढ़ रहा था और तभी से मैंने सोचा चलो लेट्स स्टार्ट पुटिंग आउट कंटेंट. नाइस. या सो इट वाज जस्ट प्योरली आउट ऑफ बताते हैं, देखते हैं, बिकॉज आई लाइक टीचिंग अ लॉट. And before I left my government service, now I'm full-time into private practice, but before I left my government service, I was an assistant professor at the medical college, yes. So I really like teaching. Oh, wow. So that's why, and that's how content creation started. But do you feel it is creating that sort of awareness that you actually want to, matlab, Most people definitely. are responding, people are listening and they're understanding? Most definitely. Yeah. So many people don't know basic things, right? I believe one of the first few videos I made was way back in the days where I made about the cervical cancer vaccine and men also taking it. Okay. Right? Abhi recently, awareness thoda, I think, bada hai because of abhi some stupid publicity stunt that somebody did. But मैं तब से हम वही बोल रहे कि men can also take the cervical cancer vaccine because वो vaccine is against a virus, HPV virus, human papilloma virus, right? Same virus causes penile cancer, anal cancer, squamous cell carcinoma of the oral cavity, pharyngeal cancer. तो जब both men women में cancer same virus cause कर रहा है, why should only women take it? True, very true. And in other countries they are giving it to teenage boys also. हाँ. India में अभी तक नहीं हुआ है. हाँ. So it is for both men and women. And तब से ये छोटी-छोटी चीजें लोगों को नहीं पता थी. Exactly. Recently I made a video on the difference between expiry and shelf life. Okay, so for example, let's say अगर आप मिल्क का टेट्रा पैक पी रहे हो, आप मिल्क का कार्टन पी रहे हो, राइट? तो उसका एक्सपायरी 4 महीने के बाद है. बट वंस यू ओपन इट, हाउ मेनी डेज यू हैव टू फिनिश इट विद इन? Whatever days. आप बताओ. This you should know. 4 महीने के बाद है ये सेट. आपने दूध खरीदा टेट्रा पैक, ओके, मार्केट से. वो तो पड़ा रहता है ना शेल्फ में, वो तो रूम टेम्परेचर पे रखते हैं. बट द एक्सपायरी डेट व्हाट इज मेंशन्ड इज आफ्टर 4 months. But once you open the milk packet, you have to consume it within a couple of days, right? Yeah. How many days? 2 days. Milk तो हाँ, I think 2 days. Okay, so once you open it, you keep it in the fridge, and despite that, आपको 2 दिन में finish करना होता है. Okay, so this is the difference between expiry date and shelf life. That I even spoke to a doctor. They mentioned the same thing कि even जो हम cosmetics use करते हैं. So अगर आप label पढ़ना सीखोगे properly, उसके पीछे एक symbol होता है. 6M, 9M, whatever. Yeah. It means after opening it, product after opening, वो 6 months में use करना पड़ेगा या 9 months में use करना पड़ेगा, even though उसका expiry 2 साल या 3 साल के बाद है. Otherwise, it can get contaminated. You can get allergies. You can get rashes. Eye drops, after you open them, you have to use it within a month. Do you see a lot of cases who are coming and using expired products or anything, and they have developed a certain sort of? Most Indians use expired products. Yeah. Because अभी कौन खत्म करेगा इतना जल्दी? नहीं, that's true. And जो आपने बोला ना कि वो एक्सपायरी डेट देखते हैं, बट एक्चुअली यू हैव टू सी कि जब ओपन कर दिया उसके बाद कितने टाइम में एक्सपायर हो रहा है. सो इसके लिए जब अगर आप सी आई बिकेम अ लॉकडाउन शेफ. सो जब इफ यू यूजिंग फ्रेश क्रीम, राइट, तो छोटा वाला खरीदते ना हम, बिकॉज हम लोग ऐसे बेकर्स तो है नहीं कि 1-1 लीटर का फ्रेश क्रीम खत्म करेंगे. बिकॉज द मिनट यू ओपन द फ्रेश क्रीम, यू हैव टू यूज इट विद इन 2 days.
तो इज Makes यूजुअली sense. द मोस्ट सोल्ड आउट आइटम विल बी द स्मॉल 100 ml फ्रेश क्रीम का वो जो टेट्रा पैक आता है. Makes sense. So yeah, I mean just stuff like that, you know, expiry date, shelf life. This is just what I can remember at the top of my head. हाँ, but that's true. Content is actually bringing a lot of things in front, जिससे लोगों को awareness तो create हो रहा है. मतलब I personally, मेरा भी जो podcast का specific notion रहता है वो यही रहता है कि एक होता है वो gossip वाला conversation है, you know, कि life में क्या चल रहा है अग्नि जी आपके. एक होता है कि आप जो कर रहे हो उससे इंसान क्या सीख सकता है, और actually awareness तो create हो रही है. But आपने जो टॉपिक्स लिए इसमें HPV का जैसे आपने बताया, मुझे एक चीज इसमें एक्चुअली क्वेश्चन है कि ये लोगों को नहीं पता कि एट व्हाट एज, लाइक व्हाट्स द फाइनल एज कि आप इस यहाँ तक तो आप ले ही सकते हो. बिकॉज जनरली अगर हम देखें तो ये बोला जाता है कि शायद 18 तक या प्रॉब्ली 25 तक कंसल्टिंग अ डॉक्टर यू कैन टेक इट. बट व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एज एंड द टाइमलाइन दैट यू कैन टेक अ HPV वैक्सीन? So guidelines say that it is for best result. हाँ. One has to take the HPV vaccine before sexual debut. हाँ. Okay, right. because once somebody is already infected with the virus, then the vaccine really doesn't prevent. फिर ज़्यादा help नहीं कर पाएगा. Okay, but जब तक किसी का exposure हुआ नहीं है and that person has taken the vaccine, they will get maximum benefit. So that is why it was said कि पहले ज़माने में, no, पहले ज़माने क्या बोल रहा हूँ, at least just about half a generation back, we used to give it to college students. Okay, now we give it to school students. ठीक है, because you never know. True. Right, and you know active होएंगे ठीक है, and you're providing them with coverage, with benefit, right? So the upper limit of giving the vaccine as per protocols is about 45 years. Okay. That is assuming because by that time already exposure हो रखा है. हाँ. तो then when you bring out, जब आप protocol ऐसे लिखते हो, जब आप ऐसे guidelines बनाते हो, that is for the entire world. Okay. Guidelines are not gospel. मतलब मैं case to case basis पे अगर होगा तो मैं ज़्यादा एज के इंसान को भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. Makes sense. It's just that if you start giving it to everybody, the cost of healthcare goes up because most of the times governments bear the cost. Right? That's why guidelines are formed. कि इतने साल से इतने साल को ही देना है. Makes sense. Okay? So upper limit इसके लिए पहले 26 रखा था, फिर उसको extend करके 45 तक कर दिया है, जो ले सकते हो. But case to case basis पे one can अगर लग रहा है नहीं अब तक डेब्यू हुआ नहीं है, प्लीज बाय ऑल मींस दो. व्हाट डू यू हैव टू लूज? हाँ, मतलब एटलीस्ट कुछ सर्टेन परसेंटेज का तो प्रिकॉशन. व्हाट डू यू हैव टू लूज? गाइडलाइंस आर नॉट गॉस्पेल. वी आर नॉट कंप्यूटर्स, यू नो. वी बिकॉज जो गाइडलाइन 6 महीना पहले वैलिड थी वो आज वैलिड नहीं है. इसका ये मतलब दैट्स व्हाई वी नेवर स्टिक टू गाइडलाइंस. गाइडलाइंस आर जस्ट गाइडलाइंस. It's just like a recipe. Makes sense. Finally तो खेलना मुझे. True that. So it makes sense कि you should visit a doctor and understand कि how is it working for you and how does that make sense. Makes sense. तो और अगर मैं एक और चीज़ के आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे जनरली what we have seen, I have interviewed a lot of doctors. तो आई डॉक्टर का किया तो उन्होंने यही बात करी कि आई चेकअप्स जनरली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द चेकअप. प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं ना, वो करेक्टिव मेजर्स पे वो जाते हैं, प्रिवेंटिव पे फोकस नहीं करते. तो आई चेकअप लोग दो सालों में एक बार करा रहे हैं. हेल्थ चेकअप इज कंपैरेटिवली स्टिल पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इट. बट व्हेन इट कम्स टू यू, तो स्किन चेकअप की अगर मैं बात करूँ तो हाउ इज इट? मतलब डू यू फील पीपल हैव दैट अवेयरनेस कि स्किन के लिए पर्टिकुलरली चेकअप्स उन्हें कराने चाहिए रेगुलरली? So Indians by default, because we have brown skin, we are invariably protected against a lot of skin cancers. Okay. Somebody who has white skin, Caucasians, okay, white skin, blonde hair, उन लोग का बेचारा मोल आता है ना, उनकी फट जाती है because it can turn malignant. Okay. They have very low melanin in their bodies. Melanin, okay, so you and I are brown. Okay. The melanin in our skin protects us from the ultraviolet radiations of the sun. Okay, हमें skin cancer से बचाता है. We can stand in the sun the entire day. हमें usually सिर्फ tanning होगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं. Makes sense. A white skinned person stands in the sun, poor chap will get sunburnt. They have to apply ऐसे भर के सनस्क्रीन तो ही बेचारे बाहर बैठ पाते, नहीं तो पूरा लाल होके जल जाते हैं. Right? So for them it becomes very important to get an annual checkup because उनके बॉडी पे ना बहुत से मोल्स भी आ जाते हैं. Okay, बहुत से सनस्पॉट्स आ जाते हैं, लेंटिजेंस, मतलब यूजिंग नॉर्मल वर्ड्स. So they have to be very careful. जरा सा भी मोल थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, बायोप्सी करना पड़ता है. Indians by and large because of melanin skin cancer is almost unheard of.
It very Okay. much exists, हाँ. right? It does exist. My practice survives on it, but it's very rare. But you are saying कि that's for white skin and for foreign skin, I would say. हाँ. What about people in India who has white skin? तो उनका भी same है या? इंडिया में जो जितना भी इंसान वाइट होना, हाँ. okay, so there are 6 grades of skin, okay, हाँ. grade 1 to grade 6. Indians usually fall between the fairest of the fairest Indian वगैरह पकड़ लो, अगर मैं कहीं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल का भी पकड़ूं, they will still be grade, I mean type 2, type 3, not more than that, and I'll tell you why. When I say white skin, their hair will also be blonde, their hair will also be brown, light brown. हाँ. Pigment ही नहीं है ना, hair भी blonde क्यों है? Because pigment नहीं है. इंडियंस यूजुअली जितना भी गोरा इंडियन होगा उसके बाल फिर भी ब्लैक होंगे. There's still sufficient melanin in their body, so nothing to be worried about. So but yes, people who live at high altitudes because of high UV index, farmers, people who are more exposed to sunlight, they are the ones who have higher chance of developing squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, like skin cancers because of sun damage. But by and large, skin checkup नहीं है, बट ऐसा इंडियंस में अभी ऐसा कुछ नहीं है that you have to do certain checkups in a year, ऐसा कुछ नहीं है. Not really. ऐसे मिलने हाय हेलो करने आने, चाय कॉफी पीने आने, you can more than welcome. You can come to my clinic, but other than that नहीं है पर्टिकुलरली. दैट्स गुड. ओके. और अगर ये एक जो हमने अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करी तो सनस्क्रीन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आई थिंक एवरी कंटेंट क्रिएटर व्हेन इट कम्स टू योर फील्ड लोग हाईलाइट करते हैं कि लगाओ, बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल जो ये बोलते हैं क्या आप चोचले हैं, यू नो, नहीं जरूरत है एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सनस्क्रीन एज अ प्रिवेंटिव मेजर? So there are 2 ways in which you age. हाँ. One is intrinsic aging, which is your chronological age. उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है. One is extrinsic aging, जो external causes की वजह से aging हो रही है. उसमें number 1 cause is sun damage. What are the other causes? Stress, smoking, pollution, nutrition, diet, sleep. Yeah. अब मैं गैस चेंबर में रहूंगा तो obviously I will age much faster, right? True. I live in a metro city. Living here is equivalent to smoking 20 cigarettes. Just if I live here, हवा यहाँ की मैं breathe करूंगा एक दिन में equivalent to smoking 20 cigarettes. And imagine if I lived in the hills, greenery, I would age much slower there, right? Yeah, true, so much true. pollution ही नहीं है. True. So yeah. all these are your external causes of aging. हाँ. उसमें number 1 आता है sun damage. Okay. So sunscreen use is one of the best anti-aging measures that you can take. Okay, because आपका skin aging को थोड़ा slow करता है. More than that, it protects you against sunburn and sun damage. Yeah. Now again, coming back to your previous question, हम लोग Indians हैं, हमें melanin है, हाँ. हमारा brown skin है, हमें सन से इतना डैमेज नहीं होता जितना वाइट स्किन को होता है, जितना कॉकेशियंस को होता है, यूरोपियंस को होता है. सो दैट्स वाई इंडियंस दे आर यूजिंग सनस्क्रीन इवन व्हेन दे यूज. वो ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करते, इतना सा यूज़ करते हैं, शगन के लिए यूज़ करते हैं. बट एक्चुअल जो रेशियो के हिसाब से जाओगे, यू नीड 2 fingers फुल ऑफ सनस्क्रीन फॉर द फेस एंड द नेक. तो जो लोग इस्तेमाल भी करते हैं लिटरली इतना ही करते हैं. व्हाट प्रोटेक्शन इज गोइंग टू ऑफर? So if you're concerned about your skin and you want to look young for a very long time, you want good glowing skin for a very long time, use sunscreen. Otherwise इतना sunburn तो हमें Indians में usually नहीं होता. नहीं होता. How often? मतलब generally it is said ना 2 hours में apply करना चाहिए. 4 hours. 4 hours, every 4 hours. Depends on the SPF. Higher SPF you can apply it later. You have any your own preference, like you recommend somebody कि this For is Indians particular? minimum SPF, I mean 30 is good enough. PA factor भी देखना होता है ना? Yes. So okay, so PA factor 3+ is good enough. SPF 30 is good enough. Is good enough. Yeah. Okay, nice. And what about अगर मैं आपसे, because you're a surgeon also, so अगर आपसे मैं बात करूँ कितने कौन से पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या कौन से पर्टिकुलर सर्जरी के लिए, स्किन सर्जरी के लिए पीपल आर कमिंग टू यू? So I do a lot of vitiligo surgeries. What is it? Vitiligo is वो जो white patches हो जाते हैं, हाँ. देखा है बॉडी में white हो जाता है, हाँ. right? That is an autoimmune skin condition. Okay. Okay, because your own body is attacking the melanin producing cells. तो उसके लिए वो white patches बन जाते हैं. So in stable cases of vitiligo, we do a lot of skin grafting. So I do melanocyte transplant, skin grafting. That is what we do. Then we do a lot of cysts, nevus, moles and all, lipomas. You know, like these are ऐसे fat tumors होते हैं. हाँ. That. हाँ. These are very common These are very common. very common skin surgeries that I do. Like this is literally my bread and butter. Nail surgeries, ear surgeries. These are
Okay. scar excisions. तो do you see कुछ ऐसी कोई particular problem है जो continuously ऐसे बढ़ती जा रही है and you know people are facing that a lot these days when it comes to skin and surgery? Mane, like for example, any problem like आपने ये seen कि probably last a decade that particular thing and that particular problem has increased, ऐसा कुछ है या it's So, all I feel, I mean, yeah, hair fall has increased definitely. People अच्छा. are getting balder much faster. हाँ Like, you know, 1 generation back, 2 generations back, लोग 50 साल के बाद bald होना start होते थे. yeah You know, then उसके बाद लोग 40 years के बाद बॉल्ड होना स्टार्ट होते थे. आजकल लोग कॉलेज में ही स्टार्ट हो जा रहे हैं. हाँ देयर हैज बीन अ केस एक्चुअली, मैं अभी पढ़ रही थी उसमें एक देयर इज दिस गर्ल, आई फॉरगॉट द क्रीम का नाम, बट उसमें यही था कि केराटिन ट्रीटमेंट में जो क्रीम्स यूज होती हैं फॉर द, तो इट हैड अ एसिडिक एलिमेंट, तो वो एसिडिक एलिमेंट की वजह से शी हैड प्रॉब्लम्स इन देयर किडनी, मतलब उनके किडनी में इश्यूज हो गए. फॉर्मल्डिहाइड. हाँ यस एग्जैक्टली, और क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत बढ़ गए. सो डू यू फील ये जो स्मूथनिंग के लिए और केराटिन ट्रीटमेंट्स के लिए गर्ल्स स्पेसिफिकली विमेन जो जाती हैं, इज इट रियली अफेक्टिंग द बॉडी एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग इन एनी विच वेज? So when you do keratin or cysteine, okay, they claim that cysteine is safer, number one. हाँ Number two, the chemicals that we use, they contain formaldehyde. Okay. okay Even the ones which claim, a lot of them claim that this is formaldehyde free, but once it comes in contact with water, it again releases formaldehyde. So the thing is, if suppose you are getting your hair straightening done, आप कितना ही करा लोगे? कितना ही करा लोगे? साल में एक बार, साल में 2, मतलब कोई ओकेजन होगा तो ही कराओगे ना. एक्सपेंसिव ऑल्सो, थोड़ी कोई रोज करा रहा है. So for the consumer, it doesn't matter so much. What it matters is for the person who's doing it, for the hairstylist, because उसको तो दिन में 6-7 जन का करना है. True. So they are the ones who are constantly being exposed to the fumes and to the chemicals. So they are the ones who are actually at risk. For them, Okay. it's an occupational hazard. हाँ See, for example, I don't know how in your life how often you'll deal with HIV or hepatitis. But every time I hold an injection, every time I hold a scalpel, कोई भी we run the risk of getting a prick, yeah right? हाँ So that becomes an occupational hazard for us. It's me, the likelihood of me getting HIV, hepatitis is at least 100,000 times more than yours. oh my god yeah makes sense. Just अभी मैंने इंजेक्शन दे रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं पेशेंट को क्या है, अब मुझे बाय मिस्टेक प्रिक हो गया. Damn, that's हो गया. true. That's true for Yeah, so sure. that way it becomes an occupational hazard for the person who's doing keratin हाँ. cysteine. And even I've read कि तुम्हारा जो भी hair texture है, for example, if it's straight, it will remain straight. Whatever you try, तुम कितना ही try कर लो in terms of treatments and everything. या curly है तो तुम्हारे curly रहेंगे. You can just Obviously. keep it. हाँ, तो you cannot, because people try that a lot कि मुझे curly नहीं पसंद. That's why they I'm go just for working smoothing. on, see right now your hair length is about 20 centimeters, let's assume, okay? हाँ Whatever I do on that is only going to work on these 20 centimeters. हाँ. मुझे curl करना है, color करना है, जो भी, Yeah. you know. But the new hair which will come, that is going to be your default mode. exactly. आपके अगर I don't know, straight हैं तो straight ही आएंगे, हाँ, right? हाँ, तो मेरे wavy हैं तो मेरे wavy आएंगे. मैं भी इसको straight कराऊंगा, color कराऊंगा, blonde, I am going to dye my hair blonde. हाँ. Okay, fine. But my new hair is going to be brown. What to do? Nothing I can do about it. But इनका कुछ damage है, particularly like coloring and all of that. Obviously, why? Okay. Simple question. I mean, simple analogy. If you wouldn't put it on a baby's skin, हाँ, wow. yeah, Makes sense. Yeah. That answers for yeah, sure. very simple thing. Yeah, makes sense. तो okay, ठीक है. So अब मैं थोड़ा आपसे your ये STIs and all of that उसके बारे में बात करूँगी. First of all, लोग कितने open है, you know, ऐसे to come out and talk about बिल्कुल the. नहीं. बिल्कुल नहीं. It gets difficult for you. It's called Gupt Rog for a reason. Yeah, तो मतलब there is. People are very shy. हाँ. They're very, very shy. And even when I've identified कि okay, this person has genital warts, मुझे दिख रहा है, हाँ. molluscum है, you know, दिख रहा है कि मुझे मालूम भी है कैसे हुआ है, हाँ. right? हाँ. They will always be in denial कि पता नहीं सर कैसे हो गया, we don't know. It's been there since forever. No, it's not been there since forever. हाँ. So people are always in denial because we all know why they got it. They just don't. Why generally that happen? I don't know. They slept around. Okay. Okay. You can't get an STD without having sex. And most of the times when people are in stable relationships and they have fun outside their relationship, they don't want. And bichare, the thing is,
चोरी क्राइम नहीं होता, चोरी पकड़ना क्राइम होता है, ठीक है? True that, very true. So बेचारे now they've got caught because now they obviously have an तब तक STD. गिल्ट नहीं होता है. या अभी बेचारों को एक बार हॉपीज हो गया, अभी ये बेचारे लाइक सर अभी आई डोंट नो कैसे हुआ, हमने मुझे मालूम है कैसे हुआ, बट ठीक है we'll pretend like it just happened. You just you tripped and you fell or something. ठीक है. I can imagine लोग ऐसे आते होंगे कि सर ये आप Most of the देख people लो. are in denial. Very few people openly they say that you shouldn't hide anything from your doctor. So listen, I want to tell you, actually so and so happened. We didn't use protection in this. I'm like, okay, fine. Thank you for being honest because it just makes my job easy. Yeah, of course. But most of the times people are in denial. So What are the most common problems that they are coming for? मतलब STIs में भी अगर मैं पूछूं तो क्या common? most common herpes. 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 What happens in herpes? Erosions, multiple. It's very painful, burning sensation. So you get multiple erosions. ऐसे जख्म हो जाते हैं. अगर वो स्किन पे होता है तो वैसे फ्लूइड फिल्ड ऐसे वेसिकल्स आते हैं. But mostly when herpes comes, either around the oral cavity it comes, either around the genitals it comes. Okay. So multiple, it's very painful. Okay. And herpes virus stays with you for life. It doesn't go. Oh. Yeah, it doesn't. And that occurs again because of multiple partners or something. So you could have had only one partner, but जिसके साथ किया उसी को था. उसी को था. अभी आपकी क्या गलती? तो Makes sense. yeah. But herpes stays with you for life. So तो इसमें कुछ ऐसे precautionary टेस्ट होते हैं? नहीं, condom is one thing, but ऐसे precautionary कुछ भी checkups or whatever, anything is there? So this is one thing when you asked me, is there some annual dermat checkup or something that one should do? Then let me rephrase that and say maybe one can get STD tests done. Okay. If one is active. Okay, if one is in a stable relationship, it's okay, Okay. But if one is not in a stable relationship and one has had multiple partners, please get STD tests done. कौन से टेस्ट हैं specific? STD panel आता है, उसमें अपना triple H आता है, which is HIV, hepatitis B, hepatitis C. Then you have VDRL, which is for syphilis with TPHA. Then you have herpes simplex, HSV 1 and 2. Okay. So and then for HPV, for that is your cervical cancer जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए we have pap smear for women. Pap smear, okay. So yeah, these. So जो herpes की आपने बात की, this is for women and men both, ऐसा या कुछ specific है कि men को ज़्यादा होता है, or is it anything like that sorts? दोनों को होता है. दोनों को ही होता है. Yeah, there is no. Both are equally involved. Yeah. Even I read एक ये भी है कि intimacy मतलब as not intimacy, intimate areas के लिए powders and all of talc powders and all of that people use. तो एक रिसर्च में ये आया था कि उससे ovary cancers और ऐसे सब cancers भी create हो रहे हैं. So is that so? Is that happening? I mean, I've heard of this, but I don't know how true this is. Okay. But would I recommend using any products down there? Absolutely not. Yeah. Skin whitening के लिए, intimacy area whitening के लिए people are actually they, and specifically for women. Yeah. तो Why? People come for this thing? I mean, I don't recommend genital lightening products. Yeah. Because the genital skin will anyways be darker than the rest of the body. That is how nature is. लोग को लगता है कि देखो मैंने जिंदगी भर मैं धूप में जाऊंगा तो डार्क हो जाऊंगा, बट उसको तो लाइफ लॉन्ग छुपा के रखा, बट फिर भी डार्क कैसे, बट है वो, nothing you can do about it. That is normal. One should never change what is normal. Yeah, but there are a lot of products that are actually coming for such stuff, Bullshit. That makes sense. That's very important. Yeah. Shifting the gear to your the diseases that you spoke about, from psoriasis to eczema and everything. इनका कितना, because जितना मैंने research किया dermatosurgery में specifically psoriasis का बहुत आ रहा है कि like a lot of surgery for psoriasis? No, surgery for vitiligo. Psoriasis का surgery नहीं करते. What happens? What is psoriasis? पहले आप मेरे को बताना. So psoriasis is again an autoimmune skin condition, okay, in which you get ऐसे red से plaques आते हैं with silvery white scales. Okay. Your skin normally takes about 4 weeks to renew itself. Okay. Skin के layers होते हैं. So from the bottom layer to the top layer, roughly about 4 weeks लगता है. In psoriasis, this gets reduced to 3 days. Your skin is hyperactive. Your skin is hyper proliferating. Okay. बहुत ज़्यादा बन रहा है skin. इतना नहीं बनना चाहिए. In your body, everything works as a balance. अगर बहुत कम बनेगा तो कभी चोट लगेगी, कभी जख्म भरेगा नहीं. दैट इज अ प्रॉब्लम. ट्रू. राइट. बट अभी बहुत ज्यादा बन रहा है, स्किन सेल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज सोराइसिस.
Okay. So in psoriasis we give a lot of immunosuppressants, we give a lot of immunomodulators. वो दवाइयों से, क्रीम से, phototherapy, ultraviolet phototherapy, उस सब से ठीक करते हैं. Nobody operates on psoriasis. There's no surgery one can do. Okay, and what about eczema? Eczema again, okay, so eczema is inflammation of the skin, okay. So eczema mein we reduce the inflammation, so we give anti-inflammatories. So again, no surgeries for eczema. No surgeries, but these are these are very common dermatological diseases. Like this is literally our bread and butter. Psoriasis, eczema, vitiligo, lichen planus, acne, hair fall, ये मतलब ये 5-10 बीमारियों में practice चल जाती है. अच्छा, इसी में पूरा लोग. Yeah, very very common because this we see it every day, day in and day out. Psoriasis, eczema बहुत common, बहुत common है comparatively. तो इनके कुछ symptoms होते हैं, मतलब it's completely visible on the skin, मतलब normal वही है. So eczema में again, so जैसे dry skin fatigue, dryness. So eczema में okay, it's a very broad, like there's subacute eczema, acute eczema, chronic eczema. Eczema पे हम पूरा podcast कर सकते हैं. But eczema, in common term, I mean layperson language, I would say call it as skin allergy. अगर मुझे वैसा बोलना पड़ा. Everything will present as a rash. But do you think ये जो आपने स्टार्ट में बात करी थी कि ऐसे internal nutrition and everything, इसका हमारे skin पे असर दिखता है? Most definitely. So whatever you are what you eat, what you drink, what you inhale, okay. Every day अगर आप फरारी गाड़ी में CNG डालोगे वो अच्छा स्पीड नहीं देगी आपको, obvious सी बात है, right? Similarly, if you are going to smoke every day 20 cigarettes, 30 cigarettes, you live in a metro city, you drink contaminated dirty water, your food is not rich in nutrition, not rich in nutrients, how will you have good health? Right? I'm not just concerned about the skin, right? पहले तो MBBS किया ना, MD तो बाद में किया, पहले तो full डॉक्टरी की, right? Everything affects all your organs. It's just that skin में दिख जाता है, but अगर आप ये सब करोगे आपका liver भी अच्छा नहीं रहेगा, makes sense. आपका lungs भी अच्छा नहीं रहेगा. It's not just कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो सिर्फ lungs खराब होगा, no, आपका किडनी भी जाएगा. Of course. Everything will go, right? So yes, it's just that whatever happens inside the body can be seen on the skin. If you have fatty liver, जब तक मैं sonography नहीं करूँगा मुझे पता नहीं लगेगा, right? But skin में तो दिखेगा ना. True. But ये जैसे stress बोलते हैं, one is stress, second is जैसे आपने खुद बात करी कि milk अगर लेते हैं या chocolates लेते हैं तो इन सब का है कि बहुत लोगों को कि milk नहीं पीना चाहिए, कि milk से भी acne can be one reason, and same for chocolates and everything. तो ये सारी चीजें जो nutrition wise से actually हमारे हार्मोनल में चेंजेस आते हैं, that causes all these acne and everything. Is that true? Yeah. That is. But I would never withhold milk किसी का. कितना ही दूध पिएगा इंसान? We may like this is about 250, 200, 250 ml. People, if at all, if they're drinking, they'll drink 2 cups max. That's not sufficient to cause acne. Okay. I will never stop somebody's milk just for acne. Okay. I want them to get their calcium. I want them to get their protein. Okay. Unless and until they're taking something like a whey protein. Now that is, whey protein is milk derived, right? Yeah. जो दही का ऊपर का पानी होता है उसको whey बोलते हैं. Okay. So whey protein definitely I would stop. I would tell them to take some other form of protein. Okay, some vegan protein या कुछ other plant-based protein लो, whey protein मत लो. Like that is what I would stop. Okay. But I would never stop somebody's milk just for acne. Makes sense. फिर भी बहुत ही severe acne है और उनको नहीं पसंद, ठीक है, we'll go to other milks, almond milk, soy milk. They're very expensive. बहुत महंगे हैं. अच्छा, makes sense. But you're saying कि उससे ऐसे कोई direct impact इतना नहीं होता है that you have to stop milk and everything. कितना ही दूध पी लेगा. Makes sense. तो ये, and you're talking about whey protein and vegan protein. So how do they differentiate vegan protein? How does that work? That is not pro-inflammatory like whey protein. So whey protein, if you want to know the science, so sugar, dairy, they release a hormone called IGF-1, insulin-like growth factor 1. Okay. This is what causes acne breakouts. This is what causes hair fall. So mangoes बहुत खा लिए, pimples आ गए, क्यों? Because of the sugar. Sugar releases insulin-like growth factor 1. It causes a flare up of your acne, flare up of your pimples. Okay. Right? Okay. Now that is very classic because when people eat mangoes, वो साल का कोटा 1-2 महीने में खा लेते हैं, right? Very normal to get breakouts then.
Diwali time, Dashera time, mithai and all that. गर्मी हो गई है इससे ऐसा बोलते हैं ना, दिस इज yeah. नॉर्मल स्लैंग। Like Diwali, Dashera, wedding season time, मिठाइयाँ खा रहे हैं, उस टाइम breakouts होना ठीक है, but you have to enjoy life also, you know. अगर ऐसे मर के जियोगे तो फिर क्या जियोगे? Pimples आ गया, big deal, हम बैठे हैं ना, देख लेंगे, ठीक कर देंगे। True, but नहीं, प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ in moderation। हाँ, but you're saying कि vegan protein is comparatively recommended, ऐसा? See, as long as you are not coming to a dermatologist for acne, everybody who drinks whey protein doesn't get acne or doesn't go bald, right? But अगर हो रहा है, then I would like to cut down wherever the possible causes are, right? अभी आप रोज का सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, जब तक गाड़ी चल रही है, बट अभी आपको हार्ट अटैक हो गया, तो अभी तो मुझे सिगरेट बंद करवाना पड़ेगा कि नहीं बंद करवाना? True that. So I would not stop somebody's whey protein. But if they're spending their time and money coming to a dermatologist for acne, for hair fall, then of course I'm going to stop their whey protein and put them onto something else. Makes sense. But otherwise, take it. Makes sense. Yeah. And do you lasers, जो एक particularly laser hair removal and all of that people are focusing on, is it harmful in any which ways because of the rays and everything? It can just cause a burn. That's it. Nothing as in deeper. Cancer नहीं. Okay. That's one, because है वो चीज दिमाग में कहीं ना कहीं. Just cause a burn. That's it. And once and if you're very unlucky, then something called paradoxical hair growth. Okay. Where वो hair थोड़ा stimulate हो जाएगा. अगर if you use very low energy, तो instead of destroying the hair, it will stimulate the hair. So आपका hair growth बढ़ जाएगा. बाप रे. But we just next time you come, we just increase the energy, we increase the fluence चला जाएगा. So but generally it is good, like laser hair removal में. It's more economical than waxing. Makes sense for a longer run. Not painful at all? Not really. The probe is much more tolerable than waxing. And hair वापस नहीं आते हैं. That's for sure. So laser hair reduction is not a permanent form of hair reduction. Okay, it is a semi-permanent form. Okay. Eventually, what will happen is your hair will become patchier. It will become thinner. And eventually, the goal is कि आपका growth इतना slow हो जाए कि आपको साल में शायद 2 बार या एक ही बार आना पड़े. इतना slow growth हो जाएगा because then just you'll require a maintenance. That's it. So it will become thinner and thinner and thinner. It will almost become invisible. But हाँ, जैसे जड़ से नहीं जाएगा. The hair will be there, but it will be so fine that you won't be able to see it. So for example, like if you look at me or if I look at you, you have hair on your forehead. Hair, but it is so fine we can't see. It's called vellus hair. Yeah. Okay. Right, like there is hair here also. Is that like this is thick? यहाँ पे भी hair है. It is so fine you can't see. So it becomes so fine नहीं दिखेगा. Makes sense. And babies are born, उनके ऊपर भी the entire human body is covered in hair. There is no body part which is not hairy except your palms and soles. Right? वो छोड़ के पूरे body में बाल है. But वो दिखता नहीं है, इतना fine vellus hair हो जाता है. So that is the end result of. हाँ, so at least it's working. जो main goal जिस चीज के लिए लोग है removal करवाते हैं. And people say become like baby's bum. You know ऐसे baby के बोलते हैं ना skin like baby. बच्चे के bum पे भी बाल होता है सब. Makes sense. True that. But ये as in जो ये चीज बोलते हैं कि it helps you with tanning, de-tanning also and everything, ऐसा सब भी है laser hair removal से? Not really. What? No? Because before we do LHR, हम लोग shaving करते हैं, right? हाँ. So maybe that is just causing little physical exfoliation. And do you think even shaving से जो generally people say कि shaving is the से cheapest form of hair removal. but उसमें वो hard hair आते हैं and all of that. That's why people ये बोला जाता है कि shave कभी भी you should not be doing shaving and everything. तो what do you have to say? You look very shocked about this because this is a big thing कि shaving तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए, otherwise उससे hard hair आता है. So if my hair is growing like this, okay? अब मैंने उसको shave किया, it gets cut at an angle, okay? So once this hair grows back, it will just feel sharper. वो hair वैसा ही है. The hair doesn't become thicker. Shaving does not increase the rate of hair growth. Shaving does not increase the density of hair. Shaving does not make hair grow faster. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं तो जो भी टकला हो रहा होता है हम उसको बोलते शेव कर. बाल जल्दी आएगा. नहीं होता ना. तो everybody who's balding would be shaving their scalp. यार इससे तो बाल thick होता है. Makes sense. Doesn't happen. And makes sense. And what about the? Which determines all of this are the hormones, the male hormone levels. Okay. So nothing is related to shaving basically because ये बहुत बड़ी चीज़ है that people have stopped
shaving and ki waxing is the only solution that people think of basically. Shaving is the cheapest form of hair removal. पैसे खर्चा ही नहीं है उसमें. हाँ, of course, that's सिर्फ true. ब्लेड ही खरीदना है. Yeah. हाँ. What about those creams जैसे wheat creams and all of that? वो harmful होती है skin को in any terms? I mean, if you're sensitive to it, you can develop allergies, right? And whenever you do any form of waxing or where you're literally plucking or pulling the hair, you can get ingrown hair also. You can get folliculitis. True. You know, you can get pseudofolliculitis. So that is something which can any form of plucking, threading, hair pulling, that can cause that. ठीक है. ओके, एक मेरे को आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछनी है. आई सॉ योर कंटेंट जिसमें आपने टैटूज पे यू हैड अ थिंग कि वहां पे से हेयर रिमूवल का आपने बात किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को उसमें थोड़ा आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड बहुत सारे लोगों को ये चीज क्वेश्चन होता ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैटूज जो करवाते हैं, आई लव टैटूज. You have tattoos? Yeah, I have two. So मेरे को वही पूछना है, टैटूज में फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन में होता क्या है? What happens when a person is having a tattoo? Let's start with that. Okay. So this is my skin. हाँ. Okay, you went to your tattoo artist. हाँ. Your tattoo artist used a needle, हाँ. which was dipped in ink. हाँ. Okay. वो needle उसने pierce किया, penetrate किया आपकी skin को, और आपकी skin का एक upper layer होता है epidermis, और उसके नीचे का लेयर होता है उसको डर्मिस बोलते हैं. एपिडर्मिस शेड होता चला जाता है एवरी 4 weeks. रिमेंबर आई टोल्ड यू स्किन साइकिल 4 weeks. वो एपिडर्मिस इज व्हाट गेट्स शेड ऑफ. बट जो डर्मिस में मेरा टैटू, मैंने अगर पिगमेंट कुछ भी वहां पे डाला, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा. सो बचपन में जो बिग बबुल के साथ वो जो टेम्पररी टैटू आते थे, वाटर दैट नॉनसेंस, वो रहता था जरूर. 3-4-5 दिन तो रहता था. राइट, इट्स नॉट लाइक कि धोया तो निकल गया, बिकॉज दैट टैटू वाज ओनली इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन. सो इफ यू एवर गो टू अ रोड साइड टैटू आर्टिस्ट, यू डोंट नो एट व्हाट डेप्थ दे आर डूइंग इट. तो अगर बहुत ऊपर ही टैटू रह गया ना, जो टेम्पररी टैटू, अगर आपकी स्किन के टॉप लेयर्स में टैटू रह गया, इट विल कम ऑफ. बट इफ द टैटू इज इन द लोअर लेयर्स ऑफ द स्किन, इट विल स्टे देयर फॉर लाइफ. But is it harmful? That's the question. So if done in a sterile parlor, like in a sterile tattoo studio, where the needles are free of any contamination, the ink is free of any contamination, your artist is also very trained, no side effect per se. People have been getting tattooed since millions of years. No side effect? Mostly. Okay, but there are certain tattoo inks, mostly the red color, which can cause severe allergies. Okay, we call it as they can cause something called as a tattoo granuloma, where अभी foreign substance आपके body में डाल रहा हूँ. That is literally what a tattoo is. Okay, whenever an outsider comes inside my body, my immune system is going to react to it. बराबर? My body will not tolerate any बाहर का चीज अंदर कैसे आ गया. ठीक है. So it will always try and fight it, expel it out. Tattoo inks by default, the materials that they use are inert. Inert मतलब वो इतना आपकी इम्यून सिस्टम को रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको इतना स्टिमुलेट नहीं करेंगे. दैट इज व्हाई द टैटू कैन स्टे देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अदरवाइज अगर मैं इम्यून सिस्टम आके उसको फाइट करने लग गया तो टैटू चला जाएगा आपका. ओके. रेड कलर, स्पेसिफिकली द रेड इंक, इट इज नोटोरियस फॉर कॉजिंग टैटू ग्रैन्युलोमास, लॉट ऑफ एलर्जीज, बिकॉज वो रेड इंक बहुत स्टिमुलेट कर देता है इम्यून सिस्टम को. अभी माय इम्यून सिस्टम में यार ये साला बाहर से कुछ आ गया है अंदर, इसको तो मार के भगाना है. तो माय इम्यून सिस्टम इज ट्राइंग टू फाइट, इसको मारो, इसको भगाओ, बट अभी कैसे भगाएंगे, बिकॉज देयर इज नो वे फॉर इट टू गो आउट. सो पीपल लैंड अप विद वेरी सिवियर एलर्जीज आफ्टर द टैटू. तो आप एंड व्हाट अबाउट टैटू रिमूवल भी बहुत लोग कराते हैं, तो इज इट अ कंपैरेटिवली अ रिस्कियर थिंग और is it fine? It works for your skin? It works fine, but you may not have 100% removal. मतलब ये है that tattoo सोच समझ के लगाओ. Okay? Yes, we have the lasers. I literally do tattoo removals every day, but I cannot guarantee you that it will go away 100%. It might not. There might be a chance कि पूरी तरीके से ना जाए. तो ये एक चीज याद के रखो. इट इज नॉट अपना फोटोशॉप का मैजिक इरेजर कि बस अभी तो गया. इनवेरिएबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स चला जाता है, या इतना लाइट हो जाता है कि ग्रेजुअली फेड आउट हो जाता है. बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट योर टैटू माइट नॉट गो. सो टैटू सोच समझ के करो. सरप्राइज्ड एंड हैप्पी आल्सो, बिकॉज जो घर में अगर जिनको भी टैटूज पसंद है उनके माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं होता. दैट्स अ थिंग कि तुम्हारी स्किन, और अक्सर वो एक चीज तुम्हारे दिमाग में डाली जाती है कि यार इससे कैंसर हो जाएगा. देखो
को कैंसर हो जाएगा, मत कर मत कर मत कर. सो आई एम हैप्पी टू हियर दैट कि एटलीस्ट बहुत उतना जितना हम सोचते हैं इतना कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है हमारी बॉडी को, राइट? Then it's good. I'm happy to hear that. Okay, so next question about one more thing that I want to ask. Salons में, सॉरी, जो आपने लास्ट जो बोला ना, हाँ सेम चीज, टैटू पार्लर अच्छा नहीं है, स्टेराइल नहीं है, हाँ आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, नीडल्स अच्छी नहीं है, हाँ. सेम उसके वजह से यू कैन गेट HIV, हेपेटाइट, मतलब कोई भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं. हाँ वो तो है. You have to take care Yeah, of so that part hygiene for is sure. something you have to be. That's really important for sure. One more question I have. Salons में हम जब भी जाते हैं, like specifically मैं पर्सनल क्वेश्चन में पूछ रही हूँ आपसे, तो salons में जाते हैं. कंसल्ट हो गई आपकी तो. Exactly. ये फायदा of having a podcast, you know. सो उसमें क्या होता है कि whenever for example अगर कुछ हमने हेयर वॉश करा है, हेयर वॉश के बाद अगर नॉर्मल ब्लो ड्राई भी कराना है, तो पीपल स्टार्ट, जो भी सैलून, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि वो वेट हेयर को ही दे स्टार्ट कोम्बिंग, राइट? एक साइड मैंने ये भी पढ़ा कि यू शुड नॉट कोम वेट हेयर्स बिकॉज उससे तुम्हारे रूट्स लूजन अप होते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव रेड. सो व्हाट इज इट, मतलब वेट हेयर कोम होने चाहिए? आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ तो मुझे पता होना चाहिए. आई कैन से येस और नो टू देम. In a salon, the thing is they cannot wait for your hair to get dry. हाँ, they can ना, but they do that कि they dry it first and then comb it. but time is money. वहाँ पे True that. टर्नओवर भी करना है, True राइट? that, true. अभी पूरा एकदम बाल सुखा के तो फिर हम नहीं कर सकते. True that. बट whenever you comb wet hair, what happens is वो बहुत प्रेशर पड़ता है रूट्स पे, राइट? एंड the hair can get entangled also. So फिर जब इतना खिंचाव पड़ता है, so hair roots will come out. It's called traction alopecia. Okay, so this is seen in also people who tie their hair very tightly. मतलब एकदम स्कूल में अगर आपको एकदम टाइट, you know, छोटी वोटी बना के एकदम वो करना है, so you start seeing that the hairline starts going back. हाँ, true that. According that to happens. the hairstyle. हाँ. Okay, people you know who comb their hair when they're wet, pressure लगा के खींच के, so they are prone to getting hair fall and you know, lack of hair density because of that. Okay, so मतलब recommended तो यही है कि नहीं करने चाहिए. Yeah, preferably don't comb it when it's wet because it's just going to put a lot of pressure on your roots. And what about blow dry, like because the lot of hot air is coming on your hair and the scalp, तो वो चीज affect करती है because lot of people has this habit कि वो रोज blow dry करते हैं. रोज It'll just damage your shaft. Heat is not good for the hair. Okay, what happens is heat damage के वजह से जो आपका shaft है, जो आपका बाल का है, उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा. Okay, but the new hair which will come, that's going to be absolutely fine. उसको कुछ नहीं होगा. See, like what we discussed earlier, आप on your shaft, आपको कलर लगाना है, आपको डाई लगाना है, आपको उसको टो कर्ल करना है, स्ट्रेट करना है, whatever you do, anything and everything that you do will damage your hair shaft. Obviously बात है. Your new hair is going to be fine. हाँ, exactly. But the point is यही हमारे ज़्यादा रहते हैं ना, नए तो जब आएंगे तो at least blow dry you should not be doing. No, I mean you can do it if there's an, I mean, yeah, but just don't make it regular. Yeah, exactly, makes sense. Okay, I have few myths also that that are actually prevailing, और उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? So I want to ask. First is sun exposure is healthy and gives you a nice tan. I think we spoke about it, but still, what do you have to say on it? So sun exposure is necessary for sure, right? Because आपके body में जो vitamin D बनता है, vitamin D is the sunshine vitamin. Okay, so जब sun exposure होगा तो आपका skin ही vitamin D बनाता है. So sun exposure is very much needed. Okay, गुफा में नहीं रहते हम लोग, ठीक है? True. But excessive sun exposure can cause sun damage, which leads to photo aging, which also in white skin leads to skin cancer. हम लोग by default बच जाते हैं. तो sun is not, I mean, don't look at the sun ऐसे दुश्मन की तरह. सुबह that's why morning sun exposure. So morning walk. Morning walks. Yeah, when the sun has just sunrise के time जो हुआ है and sunset के time जो हुआ है, that is the best time for sun exposure. Okay, not दोपहर के 12 बजे का. तो you have ऐसे anything in your head कि ये चीज तुम अगर तुम्हारे पास है, ऑप्शन नहीं है और सन में निकलना ही है, तो अपार्ट फ्रॉम सनस्क्रीन एनीथिंग एल्स दैट यू हैव कि आपको करना ही चाहिए? फिजिकल सन प्रोटेक्शन, लाइक लोग पहले सनस्क्रीन तो रिसेंटली इन्वेंट हुए ना. पहले लोग क्या करते थे? इफ you look at communities which live in deserts, which live in areas with heavy sun exposure, उनका आप attire देखो, headgear होगा. They wear, when people who live in deserts ना, they don't shirtless नहीं घूमते. On the contrary, they are the most covered. हाँ, फुल कपड़े पहनते हैं, बट लूज पहनते हैं, वाइट कलर के पहनते हैं.
एयर ट्रैप होता है, इट इंसुलेट्स देम, राइट? एंड फुल कपड़े पहनते सो दैट इटसेल्फ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सन रेज. गर्मी में बल्कि you should not roam around shirtless and naked. Yeah, true that. Very Yeah, true. so all communities which are desert and like वो सब they have Preventive clothing actually saves you. That creates a barrier for their sure. gear is like that. उनका पूरा attire वैसा ही है. Makes sense. Okay, second is only teenagers gets acne. No? Adults also get. बल्कि teenage acne तो it's part of life. हाँ. You know, there's not a problem. तो होना ही है. Adult onset acne is also very common. And on the वो बेचारा वो बहुत रेजिस्टेंट होता है बल्कि. तो बट टीनेजर्स में तो ये बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस है इस वजह से हो रहे हैं. फिर एडल्ट एक्ने सेम. Yeah. तो हार्मोनल चेंजेस कीप्स लाइफ में एक हैपनिंग. ही बार होंगे क्या? हाँ थ्रू आउट है. Why do women get premenstrual flare of acne? हाँ why? Because hormonal fluctuations, you know, it's very normal to before the periods to get 1-2 acne. That's very very normal. And anything to prevent that? Nothing. That's part of life. होना ही है. We can just, if the hormones are more regularized, you have a good lifestyle, diet is good, nutrition is good, exercise levels are good. Yes, the premenstrual flare of acne जो होगा इतना bad नहीं होगा. मतलब एक दो मे बी शायद कॉमेडोन्स आएंगे, एक दो ब्लैंड पिंपल्स आएंगे, इतना फुल ब्लोन. But that's just your body. It's nothing to think about or worry about, right? आना ही है, चला भी जाएगा. जितना स्पीड से आता है उतना स्पीड से जाएगा. स्पीड से जाता है. Makes sense. Third is hot water is better for your skin. For drinking? Hot water, bathing in hot water. So, for some hot prolonged showers or baths are bad for your skin, okay? Because that literally strips away your skin's protective oils. It dries out the skin. Okay. But that is in people who are sensitive, who are susceptible. किसी को जैसे एक्जिमा है जिसकी हम बात किया, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, उनको बल्कि हम प्रोलॉन्ग्ड हॉट शावर्स मना करते हैं. We tell them to bathe in lukewarm water. जितना गर्म पानी होता है वो स्किन का पूरा प्रोटेक्टिव लेयर स्ट्रिप कर देता है and skin becomes drier after a bath. So baths for a limited amount of time, that also with lukewarm water, not boiling water, not hot water. Okay, but it is said na even when but you. for sensitive people, everybody is not sensitive. Okay, it is said ना कि हेयर वॉश भी तुम्हें ठंडे पानी में करना चाहिए, otherwise in hot water it causes frizziness and everything. Hot water मतलब कितना hot? That depends again, but हाँ. It's fine, it's okay, doesn't really matter. Got it. Expensive skincare products are the most effective ones. No. So you might use a 10,000 rupee cream and उससे आपको एलर्जी हो सकती है, but एक 50 रुपए के जेल से आपको कुछ नहीं होगा. So it depends on your body type and you know what is suiting you, what is not suiting you. Just because something is expensive doesn't mean that it is good for you. ये एक चीज याद रख लो. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज एलर्जिक टू सी फूड, आप उसको ताजमहल होटल में ले जाके आपने उसको मस्त प्रॉन प्लेटर खिला दिया और बेचारा तो गया, राइट? सो इट्स नॉट द कॉस्ट. यस, बाय डिफॉल्ट lesser chance of somebody developing reactions because the products that they will use will be cleaner, the ingredients will be more refined. So yes, that is good. Those expensive creams are good for a reason, but it doesn't necessarily mean that it is good for your skin. Makes sense. इसके patch test करना चाहिए. Patch test करना चाहिए for whatever product you buy. Whatever product you buy, before at least using it on your face. See, face को protect करके रखना. Makes sense. You're experimenting with some new cream or something. Try, apply it on a non-exposed area. कि अगर reaction हो भी गया तो ठीक है. तो रिएक्शन तभी पता चल जाता है, बट you'll know it. Usually, immediately पता लग जाएगा अगर immediate hypersensitivity है. और अगर delayed hypersensitivity है about 48-72 hours में पता लग जाएगा. ओके, बट इसमें मेरे को एक क्वेश्चन है कि जो लेबल्स अगर जैसे हम पढ़ते हैं whenever we are buying a product तो हम लेबल्स देखते हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा चीज़ है whenever you are buying a cosmetic product कि that's a no for you, कि ये तो वो उसमें अगर है तो you should not pick that up. बट बात ये सब लेबल्स में all the right things, क्या करोगे? Everybody writes paraben free, sulfate free, non-comedogenic. Every product पे non-comedogenic लिखा होता है. Non-comedogenic मतलब ये प्रोडक्ट लगाने से पिंपल्स नहीं होंगे. हाँ. बट आज तक मैं ऐसा कोई क्रीम मुझे नहीं मिली है which is very एकदम 0% non-comedogenic. You know, it can
occlude, it can go occlude. But anything you recommend particularly labels में क्या पढ़ना चाहिए? What are the things when you're buying a cosmetic product? So आपको for a labels में पढ़ना? consumer, I mean, शगन के लिए पढ़ लो ये सब, हाँ. non-comedogenic, sulfate-free, SLS-free, paraben-free, all that. हाँ. But more so with the sunscreen, read the SPF value, हाँ. read the PA value, read whether it is waterproof or water resistant. Okay, read all of that. And see whether it is a gel, whether it's a cream, whether it's a lotion. मतलब sunscreen भी बहुत textures में आती है, right? Oily skin के लिए अलग टाइप का होता है, dry skin के लिए अलग टाइप का होता है. अगर oily skin person dry skin वाला sunscreen use करेगा, even though उस पे non-comedogenic लिखा होगा, but because it is a heavier product, cream based है, it will block the pores, मस्त pimple आ जाएंगे. So read all of that. Makes sense. Yeah, like what is the texture? Makes And वो जब तक आप उसको try नहीं करोगे, आपको पता नहीं लगेगा. और ऐसा कुछ होता है कि men और women के लिए स्किन डिफरेंट होती है, तो दैट्स वाई जो हम प्रोडक्ट्स देते हैं, निविया मेन, निविया विमेन, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं यू शुड बाय अकॉर्डिंग टू योर स्किन, वो तो है ही, बट मेन और विमेन के हिसाब से स्पेसिफिकली चेंजेस होते हैं स्किन में एंड द प्रोडक्ट दे शुड बी यूजिंग. स्किन केयर इज जेंडर न्यूट्रल. जेंडर न्यूट्रल, वाओ, ओके, दैट्स न्यू. ओके, लास्ट क्वेश्चन. पीपल विद ऑयली स्किन शुड नॉट मॉइस्चराइज. So there are specific moisturizers for oily skin. They are gel based moisturizers. हाँ. I cannot use cream based moisturizers in हाँ. somebody who has oily skin, right? Again, it will clog the pores, pimple आ जाएंगे. Moisturization is स्वाद अनुसार. Okay. Now you live in this city, tropical, humid, humidity levels are very high. You might not, you mean you can get away with no moisturization, okay? Unless you are somebody with oily skin who is using active ingredients which are drying out the skin, तब तो moisturization लगेगा, but otherwise you can get away with it. True. But you live in a climate dry, cold, or very even hot and dry, तब तो लगेगा. So moisturization is स्वाद अनुसार. One size does not fit all. Does not fit Skin all. care routine is specific to a patient, Yeah, specific to a person. बट डू यू थिंक ये जो तुम प्रोडक्ट्स वट एवर यूर अप्लाइंग, तुम्हें किसी डोमैट से जाके फिर अपने लिए प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, या यू शुड हैव जस्ट बेसिक नॉलेज एंड गो एंड बाय द प्रोडक्ट्स? You should most definitely have the knowledge. See, there are certain products which are over the counter, OTC, right? Yeah. You don't need a doctor's prescription for that. And for every small thing, you cannot be going to a specialist. Think about it. It's not reasonable or easy or cheap to go to a specialist, right? So for all OTC things, you needn't go. अभी अब घर में आप कौन सा साबुन यूज करते हो, उसके लिए डॉक्टर के पास पूछने. इनफैक्ट ये भी तो बोलते हैं, ट्रू दैट. और लूफा जो यूज करते हैं, लूफा इज जनरली पीपल से लूफा नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज इट क्रिएट्स द physically exfoliate, like Yeah. this is ragad, right? So see, you'll get the best result for your skincare routine if you most definitely go to a dermatologist, right? They know your skin type, they'll test you, they'll accordingly prescribe you products. But हर छोटी चीज के लिए तो अब नहीं जा सकते, right? अभी मैं हर जो पिज्जा खाऊं या छोला भटूरा खाऊं, I don't go to a gastroenterologist for that. True that. Okay. But what do you think? I want to ask you here कि जनरली जैसे होता है ना कि एक तो जो बीमारियां हो गई, चलो अब मुझे जाना है कि मेरे एक्ने हो गए, now I have to go. But do you think on a regular basis where you don't have any problem, तब भी तुम्हें for example the basic cleanups and everything, तुम्हें एक डर्मैट के rather than going to a salon, you should go to a dermac and get facial and cleanups and all of जैसे hydra facial and everything which is getting a lot famous, तो वो चीजें तुम्हें डर्मैट के पास करानी चाहिए. Obviously. नेकी और कुछ नहीं, क्योंकि आजकल लोगों के लिए यार कि डर्मैट तो इट्स लाइक यू नो वो पैसे वालों का काम है यार कि जाओ और डर्मैट के कराओ. पीपल स्टिल प्रेफर सैलून्स. It is not cheap to go to a specialist, I will grant you that. हाँ. Right? If you look at the ratio of a specialist to, I mean the doctor patient ratio, हाँ. plain doctor and specialist doctor ratio देखोगे, it is not easy to go to a specialist, Yeah, right? yeah. Despite you being in India where healthcare is so accessible. So yes, because of financial constraints, I actually understand. For best results, obviously go to a dermat. But I also know 1 billion people in this country cannot go to a dermat. Yeah. But any specific cleanup or anything that you suggest कि हर महीने इंसान को specifically men women कराना चाहिए? Depending on their skin type. देखना पड़ेगा patient को. Okay. We don't recommend cleanups to all. क्लीनअप करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए. अच्छा, मेक सेंस. वो तो होता ही होगा ना, बट इतना एक्सपोजर है बाहर, यूर आउट देयर, तो क्लीनअप तो आई थिंक शुड बी अ मस्ट फॉर एवरीवन every month. No. You have to see the skin. You have to see facials are a relaxation procedure at the end of the day. Medifacials, okay? Medifacials are targeting very superficially. They'll give you a glow and they'll give you that nice shine and all, but that's going to be temporary. So we will recommend that maybe if you have an important event coming, important function coming, घर में शादी है या कुछ ऐसा है,
डेफिनेटली तब यू नो, बट यू आर नॉट रियली टारगेटिंग एनी प्रॉब्लम विद इट. हाइड्रा फेशियल भी जब करते हो, इट्स नॉट टारगेटिंग एनीथिंग. Yes, it's going to act on the superficial layers, exfoliate करेगा, nice glow करेगा, hydrate करेगा. It's only going to last you a couple of days. I most definitely prescribe all this, right? But this is not therapeutic. This is as maintenance. Exactly. Right? If somebody has severe pigmentation and all, of course I will give them some facials which are recommended for that. I mean, for that particular skin type. But that doesn't mean I will not treat the pigmentation with my medical grade products. Of course. Or my peels or lasers or whatever I do. Of course. Right. So. मेक सेंस. ओके, लास्ट टॉपिक. एक चीज़ मुझसे लास्ट बात करनी है आपसे, स्किन कैंसर्स के बारे में ऑल्सो, कि स्किन कैंसर जनरली कितना कॉमन है. इफ आई आस्क, रेयर है ना? It's not that common. और कुछ सिम्टम्स हैं उसके, जस्ट इन केस अगर इफ पीपल वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स दैट इफ दे सी दे शुड गो एंड विजिट अ डर्मेट. सडन अपीयरेंस ऑफ अ न्यू लीजन. ओके, कोई नया सा आपको लग रहा है, कुछ ऐसा मोल जैसा आ रहा है, या कोई ऐसा ग्रोथ आ रहा है, कुछ मास आ रहा है. मे बी इट इज अल्सरेटिंग, उसमें जख्म बन रहा है. मे बी उसमें बहुत जरा सा भी स्क्रैच करो बार बार ब्लीड कर रहा है. राइट. डाउट हो रहा है, प्लीज जाके दिखा दो. मेरे को इसमें एक चीज और पूछनी है फिर से, कि जो प्यूबिक हेयर अगर हम बात करते हैं तो जनरली एक चीज मैंने पढ़ी है कि प्यूबिक हेयर जो है वो इट सेव्स यू फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स नाउ इज अ ट्रेंड कि लोग रिमूवल पे भी फोकस करते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई मीन कितने घने हैं. The only hair which protects you, which has a protective role, okay, is your eyebrow, eyelash, nose के अंदर के जो बाल हैं, inside the nostril, and in the ears. Okay. These are the only protective hair that we have. Other than that, hair offers a cosmetic and an aesthetic role. Humans don't rely on hair for thermoregulation. अगर आप एक animal हो, you know, ठंडी क्लाइमेट में रहते हो, then your fur is what, नंगे घूमते हैं ना animals, but उनको ठंड नहीं लगती, because the fur is protecting them from the cold. Right? Camels are also hairy, but they survive in the desert because their hair traps the air inside. Okay, provides them with insulation. Humans में hair don't offer any protection per se, right? Because हमारे hair बहुत छोटे हैं for us, for them to provide any benefit. Okay. The only hair which provides you protection or benefit is your nose hair, eyelashes, eyebrows, कान के बाल. कान में भी बाल होते हैं? I didn't know that. So we have very small hair. That is to, again, the hair in the ears have regressed, छोटे हो गए हैं, but that is to prevent some insects or some anything from going inside. These are all protect. Ears are your sensory organs, no? You have to protect them. So जो कान के अंदर सब के बाल होते हैं, वो छोटे-छोटे होते हैं. It's there. इससे एक ENT वाला क्वेश्चन जा रहा है थोड़ा, बट अगर स्टिल इफ यू कैन आंसर, ईयरबड्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें एक चीज़ ये भी बोलते हैं कि शायद whatever it's going even inside, not coming out. What do you have to say on that? So there's a rule of thumb. If something is smaller than your elbow, you don't put it inside your ear. ठीक है? That's a basic rule of thumb. Okay. The thing is, your ear is a self-cleaning organ. Okay. Again, वो जो कान के जो बाल हैं ना, they are arranged in such a manner so that आपका जो कान वैक्स प्रोड्यूस करता है, वो ऑटोमेटिकली ट्रैवल करके बाहर आ जाएगा. Oh wow. The ear is a self-cleaning organ. It doesn't need cleaning per se. Even the entire, मेरे जो नाक में बाल हैं, and the hair which is inside my full, you know, my windpipe, my respiratory tract, all that hair is वो hair ना motion करता है. तो जो भी अगर मेरे अंदर बलगम है या कुछ भी pollution वगैरह जो है, the hair in my respiratory tree वो उसको push करके बाहर ले आता है. It is like an elevator. It is literally like an elevator. कि foreign substance चला गया अंदर छोटा मोटा, my hair will like an elevator come and then it will help push it out. Similarly कान का भी it's a self cleaning organ, you don't have to clean it. Okay? Earbud डालना is not advisable because you can puncture the tympanic membrane, the eardrum. आप पंक्चर कर सकते हो खुद अगर डालोगे तो. You don't know what you're doing, right? So if you are suffering from very bad earwax, definitely go to an ENT surgeon because फिर उसके लिए proper professional cleaning लगता है, right? वो they'll give you some drops to maybe dissolve the wax अगर आपको उस level में है. But अगर इतना hard impacted है तो फिर वो professionally clean करना पड़ेगा because what you said is correct. वो you might push it inside. Half of the time people don't need it. It's just a आदत जो होता है ना, that they
I have seen people जिनको आदत है, like they just need to clean their hair. मजा आता है ना, कुछ भी कर रहे हो तो मजा आता है. Exactly. It's just pleasurable. Like, why do people dig their nose? It's a self-cleaning organ. Yeah, makes sense. Makes sense. Yeah. मेरे को कोरियन स्किन केयर के बारे में आपसे पूछना है कि कोरियन स्किन केयर जनरली इज दो न्यू ट्रेंड, पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स एंड AHAs, BHAs. मुझे नहीं पता कितना कोरियन स्किन केयर का पार्ट है ये, बट ये टर्म्स भी बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है. तो मेरे को आपसे पूछना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोरियन स्किन केयर की बात करें तो लोग आपके पास बहुत आते हैं कि मुझे वैसी स्किन चाहिए एंड आई वांट दोस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग. हाउ डज इट वर्क इन योर When people इंडस्ट्री? come and say कि I want Korean skin, हाँ right? हाँ Glass skin, Korean skin, Yeah. whatever. I tell them, you're Indian, your mother is Indian, हाँ your father is Indian, हाँ. both your grandparents are Indian. How will your skin be Korean? Makes sense. ठीक है? Yeah. That's not possible. Yeah. Okay. You can try Korean products. हाँ They are very good products. Okay, and they I mean, nice, very nice, mild products, rice water based. Nice. I like Korean products. But you cannot expect that your skin will be like a Korean skin. True that. That's not possible. True that. True that. इंडियन होके आप चाहोगे कि मेरा अफ्रीकन जैसा हो, ऐसे तो नहीं होगा ना. True that makes sense. And आपने तो अभी तो स्टार्टिंग में इतना इंडियन स्किन के फायदे बता दिए, तो why do we want that fairness and that Korean skin and everything? हमारी स्किन के इतने फायदे हैं. Yeah, तो if you want glowing skin, that is irrespective of skin color. Skin color and glow Makes में sense. कोई relation नहीं. Makes sense. Right? Yeah. Somebody like Deepika. हाँ She's dark, beautiful skin. Beyonce, dark, glowing skin, beautiful, right? So skin color and glow have no. You glow because your skin is healthy. You glow because your skin is hydrated. You glow because there are no blemishes on your skin. makes sense. उसका डार्क एंड लाइट से कुछ ताल्लुक नहीं है. Makes sense. और ये AHAs, BHAs, ये सब, if you can explain what is AHAs and BHAs? So these are skincare actives. हाँ. AHAs, alpha hydroxy acid, BHAs, beta hydroxy acid. Okay. These are very these are exfoliators. Okay. आप as a consumer जो AHA, BHA की बात करते हो, you're talking about all over the counter based products. Yeah. 2% salicylic होगा, हाँ. बहुत एकदम चिंटू मिंटू होता है. AHA, BHA हम भी यूज़ करते हैं as dermatologists, but we use medical grade products. So जो आप 2% salicylic के साथ खेलते हो, हम 20, 30, 50% salicylic acid के साथ खेलते हैं, you know. So when you play with maybe 1% azelaic or whatever, हम लोग वही 15%, 20%. So we it's the same compound. It's just a type of acid हाँ which causes exfoliation, hydration. Like lactic acid causes exfoliation and hydration. Glycolic acid, which is both are AHAs, that also causes exfoliation. It decreases pigmentation, reduces dark spots. Salicylic acid, which is a BHA, it helps open the keratin plugs, reduces comedones, reduces your blackhead, whiteheads, anti-inflammatory, reduces pimples. So मतलब these are what people normally use it for. हर एक ingredient का बैठने लग जाए तो 2-3 घंटे इधर ही नहीं, निकल got it. जाएंगे. But do you suggest कि ये लोग एटलीस्ट ये होम रेमेडीज में यूज हो सकते हैं कि लाइक पीपल कैन यूज इट, एंड जो एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन होता है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर स्किन रूटीन? Should it be a part of your skincare routine? No, that depends on whether your skin needs it or not. Okay. But these are all over the counter. See, But exfoliation and all, तो any which ways every skin needs, right? Reactions इतने crazy होते हैं, मुझे ऐसा लग जाता है. it is desirable if one exfoliates. Needs तो नहीं है. Needs नहीं है. Needs. If you don't exfoliate your skin will still be just fine. It is if you are concerned about skin health, skincare routine, you want nice glowing skin, radiant skin, then you can exfoliate. Needs it? No. Needs and wants में बहुत फर्क होता है. Okay. You need 2000 calories in a day in the form of protein and all that. You want a pizza. You don't need a pizza every day. True. Yeah, these are wants. True. Skincare acids, vitamin C, retinol, AHA, BHA, collagen, peptides, these are all wants. These are all wants. Yeah, I mean, you don't... Because अभी एक FOMO create हो रहा है कि जो लोग नहीं use कर रहे हैं, I think they are missing out on their skin routines. क्या हो जाएगा? स्किन ग्लो नहीं करेगी, हाँ. स्किन पॉलिश नहीं रहेगी, स्किन रेडियंस नहीं रहेगी, स्किन विल एज फास्टर. Exactly. So that's bad. Are they dying of that? But if it is not an emergency, if somebody is not dying, it's not. Need क्या होता है? See, you are okay. For example,
बॉल्डिंग, जो मेन टकले होते हैं, सम पीपल एक्सेप्ट इट कि नहीं ठीक है, मेरा बाप भी टकला था, मेरा दादा भी टकला था, ठीक है, मेरा बाल गया तो गया. डू दे नीड अ हेयर ट्रांसप्लांट? Do they need to do PRP? No. Do they need to use all that minoxidil? No. They want it. Some people who are losing it, नहीं यार मेरे बाल बहुत जा रहे हैं. Okay, then you want to do something about it. These are wants. These are not needs. So any skincare product that you use, if it is not curing something, अगर कोई चीज का आप उससे इलाज नहीं कर रहे, वो need नहीं है, वो want है. Whatever I do for your eczema, psoriasis, all that, those are needs. Makes sense. Yeah. That's a condition. True. Right? But if you want glowing skin, that's a want. You want glowing skin. You don't need glowing skin. You'll survive just fine. True. You'll be able to procreate just fine. You'll be able to. I mean, what is the purpose of life? To lead a healthy life and to have good, healthy, viable offspring. That is the purpose of organisms. True. आपकी स्किन जितनी भी भद्दी सी भद्दी हो, बच्चा तो ठीक ही होगा. हाँ, makes These sense. are all wants, desires. Makes sense. Intimate areas में generally बहुत अल्सर्स और लोगों को होते हैं, पिंपल्स, अल्सर्स, एक्नेस. तो ये Intimate चीज areas में acne? कितने लोगों को होता है? Acne? Acne is not the right word. I don't know what's the right word. Folliculitis होता है. हाँ, वो exactly. We call it acne, pimple हो गया. इतने साल प्रैक्टिस में मैंने आज तक तो We call it normal इंसान will come and say pimple हो गया, ऐसा simple वही बोलेंगे. So उसका main reason क्या होता है and how to differentiate वो, because people feel. So if you're shaving, हाँ. my beard is growing from top to bottom. हाँ. Okay. So if I have to shave, I have to shave in the direction of hair growth. Okay, that is normal regular shaving. Yeah. When people want a close shave or a clean shave, they shave नीचे से ऊपर, मतलब उल्टा. That is when you land up with all this folliculitis, ingrown hair, pseudofolliculitis. Okay. Okay. So in the hope to get एकदम चिकना skin, एकदम clean वो, people shave opposite the direction of hair growth, which is bad. That is when you land up with all this. So that happens actually when you're doing. So you respect the direction of hair growth. So you shave in the direction of hair growth. So इधर का मेरा जो hair आता है ऊपर से नीचे आता है. हाँ. But ये जो मेरा part आता है ये नीचे से, like this grows from below up. हाँ. So when I had started shaving as a teenager, मैं तो पूरा ऐसे ही करता था. This is a normal thing. Even waxing करने भी जो लोग आते हैं वो यही होता है कि जिस डायरेक्शन में उससे opposite डायरेक्शन में आप खींचो अच्छा निकले. तो that's a thing that is happening. I know when I was a teenager, when I used to shave everything top to bottom. Sorry, हाँ top to bottom ऐसे ही करता था. I started noticing as a teenager कि मेरा इस एरिया में मुझे बार-बार boils हो रहे हैं. हाँ. जलन भी होता था. Every time I would shave. And इस एरिया में शेव सबसे बेस्ट होता था. Later I realized कि hey no boss, my hair is only growing from bottom to top. So when I shave top to bottom and everywhere else, but this part I have to shave bottom to top. Otherwise, I will get pimples. Yeah. Okay, अच्छा, because this is. You respect the direction of hair growth. This is completely opposite of what actually is happening, because आप कहीं भी किसी भी पार्लर में जाओ. मैं नहीं जाता. हम किसी भी पार्लर में जाते हैं तो ये तो नॉर्मल है कि अरे मैडम वो जिस डायरेक्शन में आपके हेयर है उससे दूसरे डायरेक्शन में वैक्सिंग होगी. That is why वैक्सिंग के बाद बहुत कॉमन हो जाता है ना folliculitis का होना. हाँ, makes sense. Makes Very sense. common. That's a very important thing, I think. Thank you for giving this information. That should go out. Thank you so much, Agni. I mean, super amazing session. And बहुत सारे मिथ्स ब्रेक किया आपने लिटरली. मतलब ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो इतने क्वेश्चन जैसे आपने एकदम ऑपोजिट जो पर्सपेक्टिव होता है जो लोगों को पता ही नहीं है, यू हैव गिवन दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू.